Welcome back to the podcast. I'm Agam or Hum will directly continue from where we left off. Yesterday, we discussed a few things about India's work culture and Syed Mohammad Musa Raza's experience working as a ground level staff at Burger King and PVR just to understand how business actually works. We also discussed about the most important thing that also forms the basis of Owner's Why, which is the financial crisis that is faced by students in our country, which also ties back into our work culture problem. Now, getting back to today's topic, the first question that I would like to ask Musa Bhai is, I wanted to ask you this, and I'm sure many of us listeners would have wanted to ask the same question to you as well. How should a person start their entrepreneurial journey? And if they have absolutely zero experience in this field, and most importantly, how should they arrange the money for it? Okay, thank you very much for your kind welcome. So let me start with the thing called as creating a demand. Okay. Every time in a market, when you create something, a demand, obviously supply should increase. Right. Okay. So initiating any of the project, okay, any of the task, any of the entrepreneur journey, it requires courage initially. Okay. First of all, you have any concept, any idea, any thought? I believe all of us have ideas. Yes, see. So they want to convert that into the action. Yes. It's not so easy. Okay. I believe it's not individual task, any of this startup to start. Okay. It required a team. Okay. Potentially, the team should be strong, inner from as well as from the external. Okay. To begin something with a zero cost, zero money. Okay. It's very difficult in this era. Okay. If you have a brilliant task, brilliant concept, okay, brilliant idea, brilliant plan, but still it requires to burn something, burn your cash, okay. I believe that in beginning, any of the startup, any of the entrepreneurial journey, it's a very tough. Failing is a very necessary in this. No one in this world did with a single strike, okay. What happens in this, to start something which you have in a concept, as I said, it required courage. With the courage, it required a mission for what basis you're doing this thing. If you're bringing changes in the society, why? What makes you to bring these changes in the society? Just focus on the things which are related to this. If you're bringing new product, new service into a market, analyze कि ये वाला जो सर्विस प्रोडक्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मार्केट में किस तरह के चेंजेस लाएंगे. Okay, those changes will motivate you to do what you're doing. Okay, it'll keep on motivating you to do another step. Okay, in this I'll tell you. As you call it, the zero costing में कैसे शुरू करें? None of the startup initially required money. None of them. They require, build a team from your surrounding. Make a best team. Make a best choice. Okay. Nowadays, if any student he wants to start any of the startup with the zero money, his team is his college mates. His team, his surrounding people. Absolutely. So be wise to choose whom you be with. Okay? Every time. Now what I did in my journey, I was like in my final term, final semester. So what I started choosing the people. Okay, from my college only, my university itself. Right. It will reduce my costing. Okay. Reduce what? It makes me zero costing. Okay. I hire them. Okay. I ask them to work with me. Okay. Initially I had 5 people. Now, by the God grace, I got 25 people working with me. Okay. In my own mutual task. Okay. Mutual mission. Okay. Mutual vision. They all contributing their time. I love how you say working with me, not working for me. Exactly. What's the difference? I'll tell you, there's a huge difference, like working with me and working for me. See, when a leader, if he is building the what you call categories, okay, a leader should think one thing, okay, that is what is, he should take the team along with him, on back of him, okay. That some characteristic a leader should have, okay, you should be shoulder to shoulder. Yeah. Coming back to my next question, like what are the core competencies or the quintessential skills that a leader or an entrepreneur should possess? Okay, see, it's a crucial thing, okay. Initially, as I said, it takes a lot of courage to build. Okay. That courage itself, if you are failed to build that courage initially, then you're failing your startup idea.
Okay. So what happens, for example, bringing out any of the concept, any of the idea from beginning itself, start giving it name. Name the startup. Initially, name your concept within a startup name. Any of the, for example, you got idea to build a product, name that product. Any service, name that service. Naming them by recognizing their idea with that name will enhance and encourage you to work on that. Okay. For example, I got a product, something, I name that XYZ. Now I'm working on XYZ. Working with XYZ. Okay. It promotes you to work in that. Second thing, develop a website for that initially. Develop a website. Creating a website, it gives an identification for your audience, for your users, for your customers. They will be rest assured, okay, they got some platform. Okay. They got one of the thing, one of the weapon. Nowadays, website is a weapon. Okay. In this weapon, you can fight anything. You can fight a big battle. If your website is clearly explaining about your startup, everybody will be interested. So the first thing you do after you get an idea, and if you think that it has the potential to be successful, you have a problem that can be solved, is to materialize it in the real. Exactly. Through physical evidences. Exactly. Like you can create an account or you can put out your first post, things like that, right? Yes. See. So your idea is not only limited to your head. You actually get it out there. People can look at it. They can give you feedback. And then you can continuously build upon that as well. Obviously, see, what our 7 P's explains us. The final P is that your physical evidence. Specifically for a service-based business model, it is very important. Exactly. Because services are intangible, as we all know. Yes, we need to bring that to be tangible. How is that going to work? See, Yeah. we have a product. It's very easy to market that. Absolutely, you can see it's green, it's beautiful, it's white. You can explain the features and its pro points. Okay, then the people will understand. Oh, it's an artificial plant we can buy. It got a beautiful pot in there. How do you explain your service-based startup? You need to explain with a scripted thing. Okay, right. By explaining them, giving a what you call situation, a case, building a case. बता दो हुनर में क्या होता है भाई मैं एक explanation देता हूँ हुनर क्या होता है. It's a service based. Ask me how do you? I'll tell you. See, basically what happens in हुनर, I'll give a situation जहाँ पे एक लड़का बहुत struggle कर रहा है life में, right? Financial crisis. Okay, I'm giving a case. I'm giving a scenario. From this, I'm explaining you the सर्विस बेस्ड स्टार्टअप. ओके, एक और बंदा है जिसके पास बहुत भारी व्हाट यू कॉल ही स्ट्रगलिंग टू गेट लर्निंग समथिंग. ओके, जो फाइनेंशियल क्राइसिस का जो बंदा है वो कुट के एक टैलेंट पे बना हुआ है. आई वुड से सर्विसेज की सबसे बड़ी वीकनेस और स्ट्रेंथ एक ही है, उनकी इंटेंजिबिलिटी. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट मेक्स देम स्पेशल. Other than that, that's what makes them harder to market. Yes, adds the 3 extra P's to the mixture. Yes, exactly. I see. So let's move on to the third question. How should one structure their day as an entrepreneur and a business person? Please walk us through your day. What do you do on a day? सबके पास 24 घंटा रहता है. Right. ये सब कह देंगे. Everybody knows that there is no difference timing within. I mean, तुम्हें 25 नहीं मिला, हमें 50 नहीं मिला. It's how you use it. Exactly. Average एक बंदा 80 साल का average life span होता है human being का 80 years. In the 30 years in the sleeping. उसका जो 30 साल का जो टाइम पीरियड होता है ना, he spends in sleeping. I say. Now it's determined and what do you call, it's based on individual. Okay, how you utilize your time. Okay, being an entrepreneur, it's not so easy. Dividing your time into the many things, many categories. You got it. For example, a student is an entrepreneur. He divides to his study time. Okay, school hour, extra activity, doston ke saath, bahar. How do you, it's very confusing task. What I believe is that 8, 8, 8. I believe in that. 8 घंटे तुम सोने पे दो, 8 घंटे काम पे दो, 8 घंटे बाहर जगा दो. एक अच्छे से फिलोसोफर ने कहा है कि इससे तुम कौन सा भी बड़ा एंट्रेंस एग्जाम हो या बड़ा सा बड़ा टास्क हो, यू कैन अचीव. एवरी डे गिविंग 8 hours फॉर योर पैशन, 8 hours फॉर योर स्लीप, 8 hours फॉर योर कोकुलर एक्टिविटीज. इससे क्या तुम, ये रहा एक एवरेज एंटरप्रेन्योर का बिगिनिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए. There's a lot of what you call hard things in this world. There's like a 75 hard. It's very difficult. Everybody will be not successful in that. Okay. So what is my daily routine is that I basically spend a lot of time in research. Okay. Researching a new thing. Every day I come across new things. Okay. That will help me to recall my previous, what my research had been. Okay. In that, if I tally the previous research and the new research, I find similarities over there. Okay. ये एक ऑथर ने दूसरे ऑथर ने
एक ही चीज, एक ही थीम पे, एक ही टॉपिक पे डिस्कस किया है, ऐसे सिमिलरिटीज, बट द वे ऑफ गिविंग द रिसर्च इज टोटली डिफरेंट. Okay, And you try to inculcate it in your slide. yes, it will take you to the another direction. Okay, दोनों का टॉपिक एक ही है, but it's leading you to the another direction, two different direction with the same topics. It'll open your mind what basically this two authors are trying to explain about this topic. Okay, ये जो research होता है ना, जो theory based, जो wording, जो topic, जो books में होता है, that I try every time to bring it in the practical world. What happened basically, a student learn marketing and dies 3 years in the BBA or BCom, whatever in the commerce field. What he does, end of the day, interview लेता है, भूल जाता है, 5-10 लाख का पैकेज लेता है, वही एक्सेल वाला जमाता मार्केट. जो BBA का बच्चा है, he complete his 3 years degree learning various of things, marketing, strategies, many things. Yeah. End of the day, इंटरव्यू के लिए आते हैं कंपनी, hire them, what? To run SQL. Data entry करो. Excel. Yeah, it happens. I've seen it happening. I've seen it happen. Yes. So what we need to do, bring out those marketing strategies, what you learn in your school, in your college, in your university, into a practical. It sounds very difficult. इसको practically कैसे लेके आए? Read the strategy, understand the strategy, then make it into happen. And if you think about it, हर बंदे का अपना अपना अंदाज होता है. Yes. हर बंदा अलग अलग टाइप का मार्केटर बन सकता है. There are probably a million ways. A million people can sell this artificial plant in a million ways. So, coming back to the last question, I think that this is very personal for both you and me and our listeners out here. कभी कभी कैसा होता है, हम जिंदगी में हार जाते हैं, हम रॉक बॉटम हिट कर जाते हैं, ऐसा लगता है कुछ भी बचा नहीं है. तो एंड स्पेशली ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग 20 साल के हैं या 21 साल के हैं, बट वी हैव आवर ओन फेयर शेयर ऑफ मेंटल चैलेंजेस. ऑफ कोर्स यू कांट कंपेयर एनीबॉडी सफरिंग विद एनीवन एल्स, राइट? वी ऑल ऑफ अस हैव आवर ओन शेयर्ड ड्रामास एज वेल. तो बाहर कैसे निकला जाए? मैं इस चीज़ के लिए एक ही सजेशन देता हूँ, ठीक है. देयर इज ऑन गॉड, जिसमें एक बच्चा एक घोड़े से हॉर्स से पूछता है, ठीक है, हाउ डू आई ओवरकम माई ओवर थिंकिंग, माई फेलियर्स नाउ. अ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स. व्हाट डज हॉर्स से? हॉर्स बोलता है कि you don't see what happening in the 10 years. You don't know 5 years, 2 years, 1 year, 1 month, next day, next minute, next second. Nobody knows that, okay? So stop thinking about that. Now you see what you can do at this moment to overcome this thing, okay? What I suggest to every young people who face failure, create a graph, okay? It's a part of life. Failing is a part of life, obviously. Failing in a subject, failing in a task, failing in life, it's a part of life. If an individual person is not failing, it's not progressing. Okay, create a graph, create a chart, and then explain yourself in the mountain graph bar. Okay, telling that, okay, I gone to this from A point to B point, fine, I failed in the B point. From that B point, it's a beginning for the C point. You're increasing your level. Either see what I do in the failure thing, either I learn, okay, either I earn in the failing thing. How? वो सब है, तुम कैसे अर्न कर सकते हो फीलिंग में? आई एम अर्निंग न्यू थिंग, आई एम लर्निंग न्यू थिंग. फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी का असली चेहरा मिल रहा है, ठीक है, यू आर द बेस्ट फ्रेंड. वो 5,000 में मुझे धोखा दे के चला गया. उसका असली चेहरा मुझे 5,000 में बड़ा नुकसान होने से बच गया. पर्सनली आई सॉ हिज रियल फेस एंड जस्ट 5,000 रुपीज. 5,000 आगे चल के पता नहीं वो कितने लाखों का है, कितने बड़े रिश्ते का, या कितना दुख का कारण बनता है. So why not? See, I'll tell you about Honor. See, there was a lot of phases in my life. The Honor के journey में up and downs, lot of, कभी registration हो नहीं रहा है, कभी वो team response नहीं कर रहे, कभी task पूरा हो नहीं रहा है, कभी revenue model complete नहीं हो रहा. No problem. Give time. Every individual category or criteria expecting time in the demand. Okay, once we are giving the complete time, we get the complete outcome. Partial time, partial outcome. जैसे तुम करो वैसे तुम्हें मिलेगा. तो इसमें क्या होता है? बेसिकली मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ओनर में क्या होता है. एज बीइंग a young student, what are they getting? They're getting nothing. What they have nothing. Okay. For example, see, an old age citizen, they get pension. Okay. And cooperative job people, they get salary. What students are getting? Nothing. वो दूसरे का पैसा खर्च कर रहे हैं, भले ही वो माँ बाप का हो या एक दूसरे का. So I think that owner students has honor. उनके पास talent. The talent is. So is this where honor comes in? Exactly. So maybe that's the reason you named it honor, right? Every category they're getting something. वो जैसे पता है old age pension मिल रहा है, cooperative job people they get salary. What shouldn't they? Pocket expense, that's not enough. Yeah. We don't. Burden
your own parents. You don't see their, what do you call, how difficulties are they going. You need to understand, you need to realize. See, it's not same for every individual. सबके पाप, सबके family, they're not rich. They're not in that level कि तुम्हें supply करे, तो fulfill करे तुम्हारे हर नखरे. If you come to a phase and you decide now, आज से मैं नहीं लूँगा. Make a decision. Now you should be, what do you call, taking all this responsibility within you. भाई लोगों की responsibility ना लो, पूरी family की ना लो. Initially take your responsibility. तो तुम अपने खुद की responsibility, सबसे बड़ी responsibility एक young person की life में खुद की ही हो. Exactly. Now you start taking responsibility and now you decide, now you think कि आज के बाद मैं कभी parents से depend नहीं होगा, parents से पैसा नहीं लूँगा. Once you make that decision, okay, after taking decision, you start searching. नौकरी पे जाएगा, उधर जाएगा, how to earn money, सब जो लोग ये करेगा, ठीक है. Instead of going there, come to हुनर. और जो तुम्हारे पास है वही खर्च करो. क्या है तुम्हारे पास? हुनर. Spend it. That's a very nice way to put it. Exactly, I'm telling. So what basically a student should do in his young age, take a decision in early age, telling that कि आज के बाद मैं parents पे depend नहीं होऊंगा financially. I'll take my own decisions, my own income. I'll make it. There are a lot of students selling their talents. There are a lot of. Now here with the Honor platform, we are giving individual opportunities. हर एक बच्चा आके सिखा सकता है और हर बच्चा आके सीख सकता है जो सीखना चाहता है. इधर गिव ऑन रेडियस 5 किलोमीटर के रेडियस में हम तुमको एक स्किल वाला दिखा रहे हैं और 5 किलोमीटर के रेडियस में हम तुम्हारा एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं. There are so many possibilities. Exactly. ठीक है. तो डिसीजन लो. As we were talking about the failure thing and all, जैसे मैंने कहा कि भाई एक इंडिविजुअल फेल होता है तभी कि जब वो किसी और पे डिपेंड होता है. Come out of that boundaries. If you are stuck in that, शायद तुम 30 साल तक भी अपने पेरेंट्स से मांगते ही रह जाओगे. Make the decision in an early age. So basically, own up to your failures. Exactly. Own up to your responsibilities. Exactly. And basically your life as well. और क्या चाहिए? देखो यार, इंसान के लिए 3 चीजें परफेक्टली हो जाए ना. एक उसका डाइट, खाना पीना, ठीक है, या तो जिम विम जो भी मांग, ये सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, एक लाइब्रेरी पढ़ने के लिए. ये 3 चीजें प्रोवाइड कर देगी इंसान को. He'll be so comfort in his own place. इसको इंसान को बेसिकली ये 3 चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. अच्छा खाना पीना और एक जिम रूम, ओके, एक अच्छा सा क्या वो एक लाइब्रेरी, ठीक है, कंफर्ट हो जाएगा. इन दिस 3 थिंग्स. सेम वे. सो बॉडी का ध्यान रखने के लिए एक चीज़, दिमाग का ध्यान रखने के लिए एक चीज़, और दोनों को जो चीज़ दिलाती है वो है पैसा. राइट. ठीक है. तो अब तुम ये दोनों चीज़ें कैसे बनाओगे? पैसे से. ठीक है. अपना खाने का प्लान कैसे? थोड़ी ना मैं अभी मेरे पास में सिर्फ 50 रुपया में जाके डाइट अच्छा सा ले लूँ, नहीं ले सकते. मुश्किल है. ठीक है. लाइब्रेरी क्रिएट कम मुश्किल है. All of this is very insightful. Exactly. This third thing, that money builds those 2 things. Okay. मैं जानता हूँ पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक खाना मिलता है फ्री में. That will not build you. Okay. There is a restrictions. लाइब्रेरी टाइम 5 बजे तक है. उसके बाद क्या करोगे? लिमिट की बुक्स ले जा सकते हो. आज को बैठ के कैसे पढ़ोगे? नहीं कम मिलता है. मुश्किल होता है. Yes. मैं ऐसा नहीं बोलूँ. You create your own library. छोटी सी मिनी लाइब्रेरी हर घर में होना चाहिए. ठीक है. You create your own diet task. एक प्लान घर पे जो मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल उसी से बनता है. कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें. ठीक है. और ये जो दोनों को फुलफिल करता है, पैसा जो तुम्हारे पास है उसी से तुम जनरेट. इट्स अ हुनर. बेसिकली इट्स अ प्रोसेस. इट विल प्रोसेस द इंडिविजुअल ह्यूमन टू मेक मनी, टू जनरेट मनी. बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज 18 से 20 या जो भी स्टूडेंट्स है जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज है, आप उन्हें इंडिपेंडेंट बनने की सीढ़ी का पहला स्टेप दे रहे हो. आप सीढ़ी हाथ में पकड़ा रहे हो. आप उन्हें कह रहे हो कि चढ़ जाओ, जितना चढ़ सकते हो. यस. और जितना चढ़ोगे उतना ज़्यादा व्यू और ऊपर दिखता जाएगा. मैं क्या कहता हूँ पता है, जो 18 साल 19 साल या 17 से 20 साल के गैप होता है, इसे टेंडर दिमाग. यस. उस पर जो तुम कहोगे वो वही करेगा. इम्प्रेशनेबल होता है एक तरीके से. एक बात बताता हूँ. जब एक इंसान एक सिचुएशन पे आता है, आई वांट टू टेक अ डिसीजन. बस फॉर एग्जांपल मैं 12th के बाद क्या करूँ? डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, कॉमर्स करूँ या गले में बैठ जाओ. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल मेरा ही एग्जांपल ले लो. ऑन दैट एज व्हाट आई डिड, मेरा ये सबका इंडिविजुअल यही होता है. मैं जब किसी के पास या तुम किसी के पास सजेशन लेने जाते हो ना, बिफोर दैट यू ऑलरेडी मेड अ माइंड कि मुझे कॉमर्स ही करना या मुझे डॉक्टर ही बनना. वैलिडेशन चाहिए होता है. समझी के लिए तुम जाते हो. हाँ. तुम जितना भी बड़ा सेंट हो, जितना भी सारा तुम उसको कितना भी बड़ा मान लो, you not take his what do you call, you not finalize his suggestion.
तुम ऑलरेडी बना चुके तुम्हारा दिमाग. बस तुम्हें कोई चाहिए बोलने वाला कि हाँ ये कर सकता है तो Exactly. your brain is trying to find reasons actually तो ये to substantiate that ये claim. रहता है ना, you take decision very, मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत खराब डिसीजन लेते हैं ये एज में. You take and later on they start regretting, मैं क्यों किया, मैं क्यों. Yeah. Instead of regretting in this phase, you need to start building on the, वो जो decision At the present, इस current stage में. Exactly. Yeah. जब तुम ये बात भाई तुम decision ले, you took the decision. Yeah. When you start taking decision from yourself, okay, individual decisions, कि मैं यार मेरा खुद का decision था, मैं किसी से concern में गया, and now I'm good in the decision. So you are ready to take decision. Why are you not ready to take your own responsibility in the early age? Why we Indian fails to take responsibility in early age? Basically, it's not inculcated in our lives. Why? Because वो वाला माहौल नहीं दिया हमें. Spoon feeding from the very early age. Spoon feeding. Pocket money, pocket money. It's good, I know, but to some extent. In the long term, is it good? No. और अक्सर ऐसा होता है शॉर्ट टर्म प्लेजर्स आगे जाके लॉन्ग टर्म डिजास्टर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. Spoil करते नहीं, बहुत spoil कर देता हूँ. Yeah. It spoil the individual. Okay? अर्ली एज से तुम बच्चे को आदत डालोगे कि ये भाई 20 साल हो गया, अभी भी तुम समझ रहे हो बच्चा, चलो ठीक है, तुम्हारे हर पेरेंट्स का एक बच्चा बड़ा जितना भी वो बच्चा ही रहता, ठीक है, बट एटलीस्ट टेल द पेरेंट्स शुड हैव वन थिंकिंग कैपेसिटी कि मैं अपने बच्चे को बोलूं आज से कमाना शुरू कर. कोई प्रॉब्लम नहीं है, और खुद कमाना एक बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, स्पेशली फॉर अ यंग जनरेशन. कोई ऑब्जेक्शन नहीं है if his son or daughter sit in this school, has them to earn. जो एंगेज से जो अर्निंग के जो सोर्सेस लेके डेवलप करेंगे ना, दैट विल बिल्ड ए पर्सन इन द लॉन्ग टर्म. समझ लॉन्ग रन में बहुत बिल्ड करेगा. इट इज वेरी नेसेसरी, अ वेरी नेसेसरी थिंग. एंगेज से भाई मैं कहता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल हिंदुस्तान में, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, हिंदुस्तान में सबके पास कुछ ना कुछ एक टैलेंट और स्किल है. या तो गॉड गिफ्टेड है या तो सेल्फ बिल्ड है. यूटिलाइज दैट. हमारे कॉलेज में ले लो प्रेसिडेंसी के जो कैनोपी के पास गिटार लेके एक लड़का बैठ जाता है तो 30-40 लोग घेर लेते हैं उसे. इज इट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? इज इट सर्टिफाइड? नथिंग. ही इज पैशनेटेड. वो जुनून है, उसमें जज्बात है. उसने बचपन से वो गिटार, जिस दिन से उसने गिटार हाथ में पकड़ा ना, मतलब वो उंगलियां चलती है तो वो मतलब स्पार्क पैदा करता है, मैजिक लाता है वो एनवायरनमेंट. इट गिव्स अ वाइब. कोई कैमरा लेके खड़ा हो गया, भाई मेरी लेने, क्यों उसके पास जा रहे हैं? लोगों को पता है इसके पास वीडियोग्राफी के स्किल्स है. इसे रिकॉग्नाइज, या कोई कोर्स किया उसने कहीं जाके सीखा. नाउ आई वांट दैट इंडिविजुअल गाय जो कैमरे में अच्छा है, गिटार में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है, सिंगिंग में अच्छा है, डांसिंग में अच्छा है, टू ब्रिंग दैट थिंग एंड पुट इन द प्लेटफॉर्म कॉल्ड हुनर. वहां पे तुम सिखाओ, तुम अपनी डेली नीड्स पूरी करो. गिटार सिखाने वाला अपने आप को लिस्ट करो हुनर में. कोई सीखने और चाहता है तुम्हारे रेडियस में, इन कॉन्टेक्ट. I think this has been a very great and insightful conversation. देखो यहाँ पे जहाँ पे जिसका एक इनकम्प्लीट हो जाता, गिटार वाले के पास फाइनेंशियल क्राइसिस, इज इनकम्प्लीट विद द मनी, who wants to learn is incomplete with the talent. जब दो इनकम्प्लीट मिलते they complete outcome आते. बहुत बढ़िया. So I guess we'll end it on that note. Thank you so much for being our guest and enlightening us about Hunar and your mission and your values. It was a lovely and very insightful thing. We were talking with you. So that's it for today. And say bye to my guest, Syed Mohammed Musa, right now. Thank you so much. Thank you. Stay tuned.